talent, her melodious voice would be with us eternally. And the coming generation will also listen to her music, listen to her melodious songs, and they will learn so much from her. So, so it's a greatest loss for us. And there are few songs like मेरी आवाज ही पहचान है जी कर याद रहे जी नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है उस जैसी पहचान तो किसी की आवाज है ही नहीं जो जी पहचान उनकी थी जी सो आई थिंक the whole nation is mourning. We are drowned in the tears, and there is a atmosphere of sadness everywhere. Everybody is feeling so sad. She was like an essential commodity, as you can't live without water, you can't live without food, you cannot live without a roof, and you cannot live without the songs of Lata Mangeshkar. So she was incomparable. She was the greatest of all times. All the terms. Yes. And she's incomparable, and nobody can even be a second close to her. No one. Yes. Yes. Raza Saab, anything specific, any anecdote that you would like to share with our viewers? I had a conversation with her, a telephonic conversation with her. Okay. On the 14th of December last year. Ji. Not even 2 months have passed. So I was doing a show with Lata Mangeshkar, the niece of Lata Mangeshkar and the daughter of Hridaynath Mangeshkar. Ji. So I had expressed my desire to talk to Lata ji, and she was instrumental in connecting both of us on the phone. So I told her that Lata ji, I would love to come to you and touch your feet. He said, नहीं मैं आपको पैर नहीं छूने दूंगी अपने, आप आइए जरूर आइए. Then I asked her, मैं कब आऊं बताइए. तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आपको फोन करूंगी जैसी तबीयत ठीक होगी मैं आपको बताऊंगी. जी. But unfortunately after that she fell ill, and she was not keeping well also that time. Ji. Ji. So, Raza Saab, one final question, but before that, let's tell our viewers live visuals from Shivaji Park, where wrapped in India's national flag, wrapped in tricolor, yeah, India's Nightingale's mortal remains, she deserves closer to Shivaji all Park. the honors. Yes, sir, go She ahead. deserves all the honors under the sun, all the honor. And even the Prime Minister is coming to pay his respects to the departed soul. Ji. So what else one can ask? What else one can ask? There was a song of Mughal Azam के मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है. बिल्कुल. किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखें. जी. तो दुनिया याद नहीं कर रही है, दुनिया रो रही है. Everybody is crying. Everybody has moist eyes. So the Prime Minister is coming to pay his respects, and I think all the roads would be jammed. Yes, sir. It would be very difficult even for the VIPs to reach there. Sir, teeming crowd on the roads, sir. Legendary singer's funeral procession on your screen, the last journey of Lata Didi. Raza Murad Saab, it's difficult to sum up when it comes to that question of life and times, but still I'll attempt it with you, sir. This is an end of an era. एक era का खात्मा यहाँ हो रहा है.
इरा का खात्मा तो हो रहा है, इरा का खात्मा ऐसे हो रहा है कि जो आपका शरीर है, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक दिन सबको जाना है जो आया है, लेकिन जो लता जी का योगदान रहा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज अनपैरेलल्ड, शी इज इनकंपेरेबल. आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते. सो हर मेलोडियस वॉइस dipped in honey would always regale us, would always enthral all of us till our last breath. So whoever has come has to go. And nobody is an exception, but the contribution which she has contributed towards the cinema, towards the singing, is unparalleled, unparalleled, unparalleled. जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पे. Unmatched voice. She lent her voice to, you see, the kind of generations, many generations of superstars, superheroines, and her voice made their careers. Of course, undoubtedly. And I was just told, we were talking to one of the lyricists, Avinash ji, he said she would always check she's lending her voice to which actor. Yes. Yeah. Of course, and if you listen to the songs of Okay. Veer Zara Ji. and Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, it seems that some teenager girl is singing the song. So she, I think words are failing to describe her greatness. Yes. We don't have, anybody does not have the enough words to describe Lata ji. Bilkul. And from your generation, you sharing your thoughts, we have somebody from the current generation from the music industry, Abhay Sopuri sir also joining us on phone line. Abhay is joining us on phone line. Raza Murad sir, I will just request if you could just stay with us if you have time. We would be really honored if you stay with us for some more time on the phone line. Meanwhile, I'm just going to quickly hand it over to Abhay Sopuri, musician Abhay Sopuri. Abhay, your generation, you see, many are not only talking about the era that has come to an end, but the industry will celebrate her works, I think, for many generations, endless generations, the merit, the legacy that Lata Mangeshkar has left behind her. How do you look at it? Yes, well, absolutely. First of all, I would like to begin that though it's a great loss, not for just the entire country, but the entire world. We have lost one of the greatest singers of all time, somebody who has been an institution in her own self. Everybody has looked upon Lata ji like a mother, like an elder sister, and somebody from whom every musician has learnt in some or the other way. Singers in their own way, musicians in their own way, and everybody has connected with her soul, with her voice. She's amongst those great legends, who come to this planet once in a lifetime. True. And there can be no individual, I think, in the entire country, if we just talk about our country, who has not been touched by her voice. A Kala Yogini in true sense. And her life, I think we can put it as a life of celebration. So though she is not physically with us, but she'll always stay here, live forever in the hearts of billions and billions of people, with the great songs that she has given, with the great contribution for everybody, for every Indian. And I think, as I said, though physically she's no more here, but she'll always continue to be in our heart.
Yes, Abhay, stay with us. You know that the generations that grew listening to her songs and voices, and the generations of actresses and heroines late Lataji lent her voice. Yes. It's been generations and generations. Not only those who were part of the film industry or those films where the actresses were working, but even Abhay, those... Usha Uthabji is with us on phone line. I'm requesting you, please hold your thoughts. Sure. I'm going to come back to you. Usha Uthab, thank you for talking to DD India. Today, teary-eyed nation bidding adieu, and as we stay with the final journey of late Lata Didi, your thoughts, how do you remember her today? First of all, it's very, very difficult to say late, where it concerns Lata Didi. Yeah, Lata Mangeshkar, the voice of India, and singularly, the first lady of song in India. Really, oh, it's a terrible, terrible time for all of us. This is something we have to accept. It'll happen to everybody, but somehow when it happens to someone you love so much and respect and admire, it's very, very difficult. I got up to the horrible news. Actually, I got up much, much earlier, 5 o'clock, and I was watching the news, and everybody was saying that she was much better. So when suddenly we heard that she was no more, it was really, really devastating news for us, because really for the whole industry, our fraternity of musicians and singers all over, and not just us, actually even the Aam Aadmi who has really made her, it's the masses who made her, and she's really a household name, and it's just something about the volume and the quantity. I mean, the quantity and the quality of her work. Of her work is just unbelievable. What kind of legacy has she left behind for all of us, and how she has inspired generations, not just my inspiration, but not just my generation, generations before me, and 3 generations, I'm sure, after me, will still be singing her song forever. As I always say, the song is much bigger than the singer, and she has gone away, but her tunes, her voice will live forever, and nobody can sing like her. Nobody can be Lata Mangeshkar, no one. But her voice will always be an inspiration for all the people. You just tell me not even one show, one reality show where the girls don't try to sing a Lata Mangeshkar song to prove their proficiency in music. She's like the benchmark, isn't it, for everybody? And it's just amazing, the legacy she's left behind. So many thousands of songs that she has recorded. She's truly an unbelievable amount of work, and this void can never be filled. And I don't think anybody should even try to fill it, because yes, she is indeed the voice of India, and also singularly it's just the first lady of song, really. Yes. I have plenty of wonderful memories with her, and one of them being that every time I passed by her house, below her house, I would always phone her up, before getting into Pedder Road itself at Haji Ali. I would take out the phone and start phoning her. Okay. And I would always say, "Hi, Didi," and she would say, "Hello, Usha." And I used to say, "Pehchan liya mujhko?" And she says, "Such a different, alag hat ki awaaz hai aapki, kaise na pehchanu." She always kind of, she always appreciated the fact that I was so different, or my voice was so different. And I got an opportunity to sing for her 75th birthday. Okay. It was so amazing, really. Okay. I sang Bindya Chamkegi, and I sang Ajeeb Dasta. Lovely. And and after the show was over, I went up to her to get her blessings, to touch her feet. And before I could get to her, she had already started walking towards me as well. And I asked her,
I said, please give me something from whatever you have in your bag of yours to give me as a blessing. So she took out the mishri, the sugar candy from her purse, and gave it to me and said that this is good for the voice. Okay. So I had it and I said, oh, but this will finish in no time. So she said, don't worry, I'll send you some more. And within 5 days, there was a courier in Calcutta in my studio, 1 kilo of the mishri that she had. Yes. Yeah, really amazing. I just wanted to ask you, ma'am, Usha Uthap, talking to us on DD India. Ma'am, I'll just take 30 seconds because we have to share this information with our viewers. These are live visuals from Shivaji Park in Mumbai, where priests and you can see these priests making preparations for the last rites of one and only Lata Mangeshkar that are slated to be performed at 6:30 p.m. today. What made Lata Mangeshkar, in the sense Lata Didi, what was that X factor, not only from a professional point of view, ma'am, as a playback singer yourself, as a singer, as an artist yourself, but a human being, Lata Didi? Who was Lata Didi? How would forthcoming generations remember Lata Didi? I think the magic that was there in the fact that, for so many years we never knew how she even looked, because she hardly did stage shows, right? And she was actually the voice behind the wonderful faces of Meena Kumari, Madhubala, Hema Malini, Padmini, and Vaijayanti Mala, all the top artists. And that was a magic, I think, not in those days, there was no electronic media, right? So we didn't get to see the person who was singing, really. And the whole mystique behind her, I think, was so marvelous. I think it was also a question of good timing, luck for her, to be able to sing a song like "Ae Mere Vatan Ke Logo." I mean, as they would say in Tamil, "Kuduttu vachikkanume," it's really God's gift. I mean, and that "Ae Mere Vatan Ke Logo," ma'am, the way it touched the chord and moved many to tears, moved nation to tears. Oh, even now, I mean, when the national anthem plays, even when I'm sitting alone in my room, I stand up for it. I always do. And then when they play "Ae Mere Vatan Ke Logo," I mean, it's the climax as far as I'm concerned, because tears just flow down, and I get goosebumps. It's that patriotic feeling and the lyrics of that song. One has to admit that she was really, really very lucky to get that song, because the lyrics were so beautiful and the music was so simple and so good. But then you needed a voice like hers also to penetrate right through your heart, while she said, while everybody else was playing holy, I mean, our people were dying in front. I mean, really brilliant lyrics, really fantastic. And even if you didn't know or understand every word of the song, even if you didn't understand, it would surely make you cry. Really, I still feel that way. Anybody just has to say, and just has to start it, and I get goosebumps. Yes. It's just the magic of that song. Yes. And I think through the years, I mean, when you say Lata Didi, what made her Lata Didi? The thing is that in many parts of India, you either say Akka in South India would be Didi, or it's Didi, or in Kerala it would be Chechi. But Didi is more universal, for somebody. Yeah, for somebody who is older than you, or out of respect, because I say Didi and Dada to a lot of people who could be just a year or two younger than I, but because of their work, you call them. So it is, I think, a mixture of the magic, the mystique, and the amount of work, the respect for her voice,
and the respect for the kind of contribution. I The think it's all voice will put be, together. yes, the voice will be celebrated, but Didi has gone silent. Lata Didi has gone Yes. silent. And Usha, I just want to share this much with you. Yesterday was Saraswati Puja here Ji, in Calcutta. And it was so amazing that she stayed till the puja was over. And today was the Visarjan. We had the Yes. puja in my studio Yes. as well. And we finished the puja in the afternoon and took her away, Saraswati, Yes. and put her into the Ganga. yes, And that is what is so, so sad. But Yes. in a way, it's I think it's 92 was a good innings, and I think she contributed so much. And unparalleled contribution. Usha Uthap, many thanks, ma'am, for talking to us and sharing your thoughts on this day, which will go in the pages of history when one big chapter and an era has come to an end. Abhay Sopuri, thank you, Usha Uthap, for joining us. Abhay Sopuri, Abhay, I'm sure you heard Usha. I'm sorry, you are with us as we stay with the visuals, Abhay. We must tell our viewers that these are live visuals streaming from Shivaji Park in Mumbai. The funeral procession, the mortal remains of late Lata Mangeshkar are en route from Prabhu Kunj to Shivaji Park. Preparations are underway for the last rites, and Abhay Sopori, musician composer, is with us to share his thoughts. Abhay, not only the ending of an era, but the current generation or your generation of music fraternity, the big takeaways of Lata Mangeshkar's richest body of work. Abhay Sopori. Abhay, are you there? Abhay Sopori, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, go ahead. Okay. Lata ji has been here, I think, such a precious, it's like a precious gift from the Almighty to everybody in the country and the world also. Generation after generation has witnessed her great art, and a career spanning, I think, more than 60 years with more than maybe 50,000 songs or something that she has contributed. It has touched everybody. I mean, we have grown up listening to her songs, the generation before me, the generation before that. So it's generation after another generation. And certainly a huge loss for everybody. And it's like a personal loss for everybody. But again, I would say, it's something which we have to accept. It's the fact of life that, people come, they live their life. But we have to celebrate her life. We have to celebrate what she has given us. I mean, when we are sitting alone in the room and we are humming the songs, it's one of the great songs, perhaps by Lata ji, which people sing. And even composers have learned from her songs. The young generation musicians have learned from her. The new singers which have come up. I mean, if you go to reality shows, this is what we hear. We hear the old songs, and most of the female songs are Lata ji's songs. Such a great contribution. I think we are really blessed to have been born during the time when Lata ji was on this planet. I really feel that. Abhay, a bit on the kind of international recognition that was accorded to her. In 70s, the Royal Albert Hall London concert. The way she took India to the world, India's music to the world, from the canvas, Abhay Sopori, regional Hindi cinema, regional cinema, and taking India's music to the world. Wider canvas she had. Absolutely, Sakal. People, even if they don't know the language, they have loved her songs, especially the European side, Russian side. They have been in love with the songs. I've been there, even on towards the countryside and all.
And you go there and they see you as Indians, and they come up with one or the other songs by Lataji. She has had and will always have millions of followers, those who are not known to the languages which we speak, any of the Indian languages. And the way she took Indian art and culture, it's a great contribution, because we have had a number of singers, number of wonderful musicians, but she was somebody who actually went to some other level. As I said, it's like a God gift to us. It's something. She was blessed by Mother Saraswati, the mother of art, and people really loved her. I've seen her photographs in people's home, really worshipping her, especially musicians, certainly. So, taking Indian music across the world, and we pray to God that give us few percentage of the art that Lataji has had. Yes. Abhay, stay with us. Lataji's, late Lata Mangeshkar's, Bharat Ratna, late Lata Mangeshkar's mortal remains, as we speak, viewers, are en route from Prabhu Kunj to Shivaji Park, where the last rites are going to be performed after 6 p.m., reportedly around 6:15, 6:30. When the mortal remains arrive, the final journey is going to culminate here at Shivaji Park, and the mortal remains will be kept there for public to pay their last respects, to pay their homage. And Abhay Sopuri, musician, lyricist, music composer, with us on phone line to talk about the life and times. Abhay, as a musician yourself, the big takeaways that you would describe. Lataji's voice, many have described, in fact, as ageless. Ageless voice to several generations of heroines. What set it class apart, Abhay Sopuri? I, as a composer, I feel, the way Lataji had her training, then being with some of the greatest composers that India has seen, that really took her art from something which was perhaps a gift of God to something with her riyazat, with her practice, with her devotion, dedication. She took it to such a huge height that it actually became a milestone, I would say. And over the period of time, with the kind of work that she did, it's hours and hours of practice. We must remember that she belonged to that particular era where everybody had to play and sing together in order to record a song. So they would put hours and hours, days and weeks together preparing for the recording. It's not something like today, the singer comes to the studio, they record, it doesn't matter, come up well, they record the second track. It had to be done in one go. And that particular process, the way she would have practiced for days and weeks together, gradually I'm sure she took her voice to such a level that with her growing age, her voice became younger and younger. I mean, if we hear her song in Veer Zara, it sounds somebody like a 16-year-old or 20-year-old person singing. It doesn't look somebody who is perhaps more than 70, she once said, since we're talking about, you're specifically talking as a composer about the training that she went through during her generation. She says, I don't know whether future generations will celebrate the future generation that believes in instant gratification. The humility in her, basically. Absolutely. And I was watching one of the programs in the morning on DD, and I think Mr. Bedi was there, and he rightly said, with so much of art and so much of celebrated life, something which comes to a person is humility.
and that that humility you could even hear from her voice. Even if she would speak, you could understand that. I think that is one of the greatest things that a Amar, person just can hold your carry. thoughts. Javed Akhtar Saab is with us on phone line. Javed Saab, this is a loss which can never be filled at all. That's true. That's very true. Ji. We never had a Lata Mangeshkar, and we'll never have a Lata Mangeshkar. She was the one and only. And it will never happen again. If you could share some, sir, I understand it's a very difficult moment. Your rendezvous, your moments with her, what do you remember? Yeah. What all can you share with us? Well, I have about been her? fortunate enough because I have been her admirer like millions of people, billions of people. And I was so fortunate that my very first song was sung by my both favorite singers, Lata ji and Kishore da. And that was Dekha Hai Khaat Se Silsile Hue. And after that, she has sung many songs that were written by me. And we interacted, we somewhere we struck a note, we developed a rapport. And perhaps, first of all, I mean, she was very kind and generous, that she appreciated my work always. And besides that, what we had common is sense of humor. And publicly, her demeanor was very dignified, silent, quiet, distant. But people who know her closely know that she had a very, very sharp sense of humor. Okay. And she would laugh so heartily, like a child, when she would listen. She listened to a good joke or a good remark, witty remark, thoroughly enjoyed, wholehearted. So somehow we developed a rapport, and she was very kind to me. And in last few years, we couldn't meet as often as we should have, but we kept a contact on phone, and every 2-3 days, either I would call her, or she would call me, and if she would call me, she'd send me a SMS, send me a message, I would send her a message, and if we find some good joke, we used to forward it to each other. And she was a person of great quality. Okay. Obviously, I mean, there is no point talking about her greatness as a singer. I mean, she was a singer who was appreciated, admired, and respected by people like Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj, Pandit Ghulam Ali Khan has made a comment about her, right? So even the classical people who perhaps are rather skeptical about field singing have great respect and admiration for Lata Mangeshkar. Besides that, you know, her personal demeanor, her social demeanor was so dignified, so suave, so perfect, and in spite of being extremely humble, she would never talk big, she would never be very, as a matter of fact, used to be much more appreciative of others, of the tune, of the words, of so on. But somehow she carried a kind of a persona, a kind of dignity and aura that leave aside the ordinary fans from small town. People who have worked with her for decades, they could never get over the song. I mean, if you ask me how many times you have met Lata Mangeshkar, I won't be able to tell you how many times I have met Lata ji, how many times I have spoken to her. But in spite of that, that all remained there. Like when I met her, when I was talking to her, I was you just couldn't take her for granted. She was Lata Mangeshkar. Okay. And you are aware and you are awed that you are talking to Lata Mangeshkar, you are sitting in front of Lata Mangeshkar, Lata Mangeshkar is talking to you, and now you are answering to Lata Mangeshkar. So, this awe was even in those who have worked for her, with her for decades. As Lata Didi has gone silent, Javed Akhtar Sahab, that X factor, what made Lata Mangeshkar, Lata Didi of the Indian film industry? I'll tell you, I don't know. I mean, we can only, X factor can only be guessed. You can never be 100% sure. Right.
I will say that there are singers who will sing in perfect form. There are singers who have good voice, but they are not Lata Mangeshkar and they cannot be Lata Mangeshkar. There was one quality in her, it is not much talked about. She would take the word very seriously. And every piece of poetry, the word good poetry, doesn't say everything. It takes you somewhere and wants you to understand certain things on your own. It is all good poetry is the tip of the iceberg. Okay. And here was a singer who instinctively could feel that iceberg. And she could bring that substance of the song in her voice. I'll give you an example to make it more, it shouldn't sound esoteric. Like there is a song in Veer Zara. Okay. Tere liye hum hain jiye honton ko chiye. But this song in the film is placed at a place where the hero and heroine had lost each other. They had parted for years, decades, and they are meeting after decades. Their hair has become grey. They have wrinkles on their faces. Everything now belongs to the past. Everything is lost. For musicians, for the world of music, she was the one person. In the world. This is not in the tunes or in the words. It is in her voice. When you listen to that song, you will know that this song, when this parting is of not of 6 months or 3 months, she is talking of decades. You can feel that in the singing. She is saying that everything is over. The song is not saying it. But this is the thing, like in one of my songs she had some decline in godmother, थक गई जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं. अब वो थक गई हूँ मैं, when she pronounces थक गई हूँ मैं, you can feel her tiredness of years. Now from where that has come, I don't know. When she sings हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, so she feels the softness of word मुलायम. So basically, And that conveys was, it to you. yeah, Lata Mangeshkar brought soul to every Oh song. yes, oh yes, oh yes. Yes. Oh yes. You know, we who have worked with her, we know that the song, this is the tune, these are the words, now Lata ji comes, write the, she used to write the song in her own handwriting. You can't, you wouldn't give her a printed song. She would write it herself. And then she has some code language only she knew about it, where she will mark, where she'll underline a word, where she'll make a sign on the top of the word, where she'll slash it. And so after writing it, she would make some symbols on them, which perhaps only she could understand. And by the time that song is recorded, you could feel that how the song has become alive. Alive. How the song has taken a kind of life and it is throbbing on its own. This was a quality without changing the tune, without changing the word. How much she could contribute in a song. I mean, there are competent singers, you call them, they will take the words, they will take the tune, they will learn the tune, they will sing competently. They will be totally in soul, they will sing the word correctly, and that's about all. Here was somebody who put some aspect of, and how, I mean, this is the question. This is not totally, I mean, this is not my reverence that is making me say that. It is a totally objective observation. I get that, sir. Yes, sir. Javed Akhtar Saab, besides the artist that she was, Lata Mangeshkar, I wouldn't say just a playback singer, that would be an understatement for a legend like her, sir. But that human being, that humility, we've been speaking to stalwarts of film industry like you, sir, that one thing that everybody wants to talk about is the little girl in her and the humility in Lata Didi. Your thoughts? And at the same time, extreme dignity.
Extreme dignity. Dignity. Now this is a rare combination. When you become very humble, people can be condescending or patronizing if you are too humble. But at that same time, I mean, it is a paradox in a way. But she was the paradox. That in spite of all her humility, she was an extremely dignified person. Nobody could dare to cross a line. Javed Akhtar Saab, one final word from you. When you look back, the life and times of Lata Didi, today an era has come to an end. Yes, I mean, she was perhaps the last symbol of that era. You know, I feel that the big people of yesteryear and the big people of today, in every era there are some people who are considered to be big. And even today, and I'm talking whether politics or literature or art or music or sports or anywhere. The difference between the celebrities of yesteryear and of today is the difference between a leather-bound library edition and a paperback that is selling on the railway station. People have lost gravitas. And lightweight. They are lightweight. Lata Mangeshkar had a gravitas which, I mean, only people who have seen her existence would know that. Dignity, power, and without any show off of that. In spite of being extremely polite, gentle, appreciating others' work, giving others very kind, generous compliments, she remained a very dignified person and a very private person. Very private person. Javed Akhtar Saab, thank you very much, very much for sharing your thoughts at this moment when nation of billions is teary-eyed and we tributes continue to pour in. Thank you, sir, for talking to DD India. Thank you. Shukriya. And we go back to these, in fact, we stay with these live visuals of the final journey of Lata Didi, final funeral procession of Lata Didi, the legendary Lata Mangeshkar, which started from her residence at Prabhu Kunj en route to Shivaji Park in Mumbai. People, Mumbaikars in fact, thronging the streets, wanting to be part of this moment that is going to go deep down in the history, the date which marks an end of an era. Mangeshkar. Her earlier training in music was from her father, who to follow his footsteps. But Lataji and destiny had other plans. To her to look after. हैं शिवाजी पार्क, जहां सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम, पूरा बंदोबस्त रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है ताकि लता मंगेशकर जी का अंत्येष्टि का कार्यक्रम यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा सके। लता मंगेशकर जी जो एक ऐसी सुर साधक थीं जिन्होंने न केवल कला प्रेमियों और सुर प्रेमियों के जीवन को प्रेरणा दी, उन्हें प्रभावित किया, बल्कि हर आम जन, आमो खास के जीवन को उन्होंने अपने सुरों से छुआ। एक प्रेरणा स्रोत, एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, एक सरल भाव, विनम्र शख्सियत
जिनसे हर कोई प्रभावित रहता था। अपनी कला को लेकर वो इतनी समर्पित थी कि बचपन से जब उन्होंने कला का सफ़र शुरू किया तब से लेकर आखिरी सांस तक वो अपनी कला को समर्पित रहीं। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपने गायकी के ज़रिए न केवल फिल्मों को अहम आयाम दिलाए, संगीत निर्देशकों के साथ काम करते हुए अपना एक अहम मुकाम हासिल किया, बल्कि इस सफ़र में वो जाने कितने ही उदाहरण अपने गीतों के ज़रिए सामने रखती चली गईं, जो आज हम सब के जीवन को सजा रही हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, हर आयु वर्ग उनके गाए गीतों को ही सुनकर बड़ा हुआ है। ऐसे गीत जो हमारे जीवन के हर भाव से जुड़ जाते हैं, ऐसे गीत जो हर उत्सव से जुड़ जाते हैं, ऐसे गीत जो बहुत बार हमें हमारे जीवन में मानो हमारा हाथ थाम लेते हैं, ऐसे गीत जो हमारे मन के भावों को रेखांकित करते हैं अपने शब्दों और सुरों से, ऐसे गीत जो हमारे जीवन को तो सजाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा संगीतमय माहौल तैयार कर जाते हैं जो विश्व भर में लोग उसे अपना जाते हैं। ऐसे सुर साम्राज्ञी जिन्हें स्वर कोकिला इसलिए कहा गया कि उनके गाए गीत में कमी निकालना असंभव था। अपने कला साधना के साथ, अपने सुर समर्पण के साथ साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व के ज़रिए भी बहुत से लोगों को दिशा दिखाई। युवा कलाकारों को वो हमेशा अपने प्रेरणादायी शब्दों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती थी। हर जन उनके गीतों से अपने जीवन को सजाता रहा और यही कारण है कि आज जब शिवाजी पार्क को जा रहा उनका पार्थिव शरीर, उनके इस अंतिम सफ़र में लोग उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। प्रभु कुंज उनके निवास स्थान से शिवाजी पार्क तक का उनके अंतिम सफ़र में हर वर्ग का लोग, हर कोई शामिल हो रहा है, हर कोई साक्षी बन रहा है उनके इस अंतिम सफ़र का। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी सफलतम कलाकार होने के बावजूद उनको घमंड ने छुआ तक नहीं था। अत्यंत विनम्र कलाकार जो ये मानती थी कि वो किसी की गुरु क्या बनेंगी, क्योंकि उन्हें तो अभी भी गुरु की तलाश है। एक ऐसी कलाकार जो अपने गीत नहीं सुनती थी ये सोचकर कि उसमें मुझे बहुत सी कमियां नज़र आएंगी। एक ऐसी कलाकार जो आज सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर गई हैं। दिल को ये कहते हुए भी मलाल हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे बीच हमेशा रहेंगी। लता दीदी या लता बाई या लता बेन, किन्हीं भी नाम से उन्हें पुकार लें, लेकिन हम सबकी प्रिय गायिका रही हैं लता मंगेशकर जी, और अपने गाए गीतों के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों में राज करती रहेंगी। लता दी जो हालांकि एक एक्टर के तौर पे उनका सफ़र शुरू हुआ था बहुत छोटी उम्र से, मात्र 5-6 साल की थी जब उन्होंने एक्टिंग, थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका जीवन लक्ष्य तो गायकी से जुड़ा था। और इसीलिए जब एक बार उन्होंने गायकी का दामन थामा तो सुरों की देवी सरस्वती ने भी अपना आशीर्वाद उनके सर पे रखा। 1942 में जब उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया, वो एक मराठी फिल्म के लिए था। हालांकि वो गीत बाद में फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन 1942 में उन्होंने जो संगीत का सफ़र शुरू किया वो हर दौर में और ज़्यादा आगे बढ़ता गया, नए आयाम छूता गया। 1949 में फिल्म महल में जब उनका गाना आया तो उस गाने ने उन्हें शोहरत की नई ऊंचाइयां दिलाईं। आएगा आने वाला आएगा, ये गीत ऐसा गीत था जिसने संगीत के दौर के युग में ही एक नए दौर का इन मायनों में शुरुआत कर दी कि जहां पहले गीत एक्टर्स के नाम से पहचाने जाते थे, वहां इस गीत ने गायकों को भी एक अलग मंच प्रदान किया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो में फ़ोन कॉल्स आने लगे ये जानने के लिए कि मधुबाला ने इस गाने पर एक्टिंग तो की है, लेकिन इस गीत को गाया किसने है। और बस वहाँ से लेकर उसके बाद लता जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा, और उनके कला समर्पण के कारण
जहां पहले भारी आवाज़ को फिल्मों में माना जाता था अच्छा, वहीं उनके आने के बाद और उनके सुर साधना के आगे सबने घुटने टेक दिए और उसके बाद उनकी आवाज़ ने एक छत्र भारतीय सिनेमा में राज किया। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने हर तरह के गीत गाए और हर तरह के गीत में मानो एक अलग जान डाल दी, चाहे वो 16 साल की लड़की का कैरेक्टर हो या फिर एक वृद्धा का। उन्होंने हर रोल में यूं जान फूकी कि उनके सुर हर एक के दिल को छू गए। लता मंगेशकर जी, जिन्हें आज पूरा देश विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है, जहां शिवाजी पार्क में तैयारियां पूरी हैं उनकी अंत्येष्टि के लिए और उन्हें पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिन्हें भारत रत्न का भी सम्मान मिला, ऐसी शख्सियत जिन्हें दादा साहेब फाल्के के सम्मान से भी नवाजा गया, ऐसी शख्सियत जिन्हें पुरस्कार भी जिनके आगे छोटे पड़ गए, और ऐसी शख्सियत को अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोपहर को दिल्ली से रवाना हुए और वो मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो लता दीदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लता मंगेशकर जी को वो देंगे अपने विनम्र श्रद्धांजलि, अपनी बहन को देंगे वो विनम्र श्रद्धांजलि, क्योंकि लता दीदी उन्हें अपना भाई मानती थीं। लता दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरा नाता था। ट्विटर के ज़रिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार लता दी से मिलने भी पहुंचे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट संदेशों के ज़रिए लता दी हमेशा उनके संपर्क में रहीं और हमेशा अपनी भावनाएं भी उनसे साझा करती रहीं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के अपने सारे कार्यक्रम को रोककर पहुंचे हैं मुंबई लता दीदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लता दीदी के अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अंत्येष्टि में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम संस्कार, जिसके लिए तैयारियां पूरी हैं, और लता दीदी के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच गए हैं। लता दीदी, जिन्हें आज पूरा देश और विश्व के कोने कोने में फैले उनके सुर प्रेमी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनके इस अंतिम सफ़र में हर कोई मानो इस सफ़र में उनका साथी बनना चाहता है। ये ऐसा सफ़र है जो हमें ये याद तो दिला रहा है कि लता जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके गीत हमेशा हमारे बीच उनके सुरों को जीवित रखेंगे। लता दी जैसी महान शख्सियत, एक महान कलाकार, एक महान सुर साधक, एक महान कलाकार, जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं मुंबई। प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क से। लता जी का हंसता चेहरा जो हमें याद दिला रहा है कि किस तरीके से अपने गीतों के ज़रिए हमारे जीवन को सजाती रही हैं लता दी, जो आज हालांकि देह उनकी के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने सुरों के ज़रिए हमेशा हमारे जीवन को अपने गीतों के ज़रिए यूं ही सजाती रहेंगी। इससे पहले हमने देखा प्रभु कुंज से फूलों से सजी इसी वाहन में तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, जिसे प्रभु कुंज से सैन्य सम्मान के साथ रवाना किया गया और शिवाजी पार्क पहुंच रहा है। उनका अंतिम सफ़र यहीं संपूर्ण होगा और शिवाजी पार्क पहुंचने पर उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरे राज्य के सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी शख्सियतें जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया होता है, उन्हें राज्य के सम्मान का भी सम्मान मिलता है। रक्षा मंत्रालय पूरी जिम्मेदारी निभाता है इस राज्य के सम्मान की, और राज्य के सम्मान के साथ लता दीदी को भी तिरंगे में लपेट कर लाया जा रहा है शिवाजी पार्क, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहते हैं कला की कोई सीमा नहीं होती। लता दी के भी सुरों की कभी कोई सीमा नहीं रही। हर आयु वर्ग उनके गीतों से, उनके सुरों से अपने आप को जोड़ता चला गया। भौगोलिक सीमाओं के दायरे को पार कर उनकी आवाज़ विश्व के कोने कोने तक पहुंची। यही कारण है कि आज उनके जाने पर देश ही नहीं, विदेशों से भी उन्हें श्रद्धांजलि संदेश मिल रहे हैं।
हर कोई अपने शब्दों से, अपने माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लता दी वक्त के साथ हर तरह के परिवर्तन से भी अपने आप को जोड़ती रहीं, न केवल गायकी बल्कि जीवन में भी। और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया पर भी पिछले कुछ सालों में सक्रिय दिखीं। चाहे ट्विटर हो, जहां वो ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात रखती रहीं और अपने सुर प्रेमियों के साथ जुड़ी रहीं, तो वहीं इंस्टा पर भी वो एक्टिव रहीं। लता दीदी जो हर आयु वर्ग के लिए दीदी रहीं, हर कोई उन्हें लता दीदी इसी नाम की आत्मीयता के साथ मानो अपना गहरा नाता उनके साथ महसूस करता रहा हो। और यही कारण है कि इस वक्त आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग खड़े हैं उनके इस अंतिम सफ़र का साक्षी बनने के लिए। एक ऐसी महान कलाकार जिन्होंने हर कला प्रेमी के जीवन को छुआ, एक ऐसी महान कलाकार जो अपने व्यक्तित्व के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए सबके सामने छोड़ गई हैं। एक ऐसा अनुपम उदाहरण जो आने वाले लंबे वक्त तक हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। लता जी के पार्थिव शरीर के साथ सेना का वाहन जो आप देख सकते हैं, लता जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर जो मानो ये कह रही है कि मैं हूँ आप सबके साथ और हमेशा रहूँगी। आज पूरा देश खड़ा है लता दीदी के साथ उनके इस अंतिम सफ़र में। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, भारी तादाद में लोग लता जी के इस अंतिम सफ़र में शामिल हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों के ज़रिए अगर सोशल मीडिया पर आप संदेशों को पढ़ें तो महसूस होता है कि किस तरह, कितनी गहराई से लोग लता दीदी के जाने को एक बड़ी कमी के तौर पर अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। लता दीदी जिनके जैसा कलाकार ना कभी था और शायद लंबे वक्त तक आगे भी नहीं होगा। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने युवा कलाकारों को भी हमेशा प्रेरित किया। एक ऐसा कलाकार जो ये कहती थीं कि मेरे से भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे गायक हैं। एक ऐसी कलाकार जिन्हें लोग सर माथे पर रखते थे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक छोटा कलाकार मानती थी। लेकिन उनकी गायकी, उनके सुर साधना, उनके कला समर्पण आज सबके सामने एक नज़ीर है। एक ऐसी कलाकार जिनका कोई सानी ही नहीं दिखता, एक ऐसी कलाकार जो एक विनम्र शख्सियत का भी उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करती रही हैं, जिनका हर एक गीत मानो सबके दिल में उतर जाता है। अगर आज किसी से पूछें कि लता दी का सबसे पसंदीदा गीत आपके लिए कौन सा है, तो चुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लता दीदी के गीतों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि जब आप अपने पसंदीदा नगमों की फहरिस्त बनाएं तो आप पाते हैं कि एक के बाद एक नगमे लता दी के गाए हुए हैं। यही कारण है कि 1974 में वो वक्त फिर आया जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट बनी, यानी एक ऐसी गायिका जिन्हें सबसे ज़्यादा गीतों के लिए रिकॉर्ड किया गया हो। और इस सफलता के पीछे भी रहा है बड़ा संघर्ष। कला के प्रति लगन और समर्पण एक बात, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। एक ऐसी विनम्र शख्सियत जिन्होंने जीवन की मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पहले एक्टिंग तक की और उसके बाद गायकी का सफ़र शुरू हुआ। और यही कारण है कि उनके जीवन का उदाहरण आज सबके सामने है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं मुंबई लता मंगेशकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। शिवाजी पार्क में लता दीदी के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी।
पुजारी और परिवार के साथी लोग सभी उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों को पूरा करते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम, पूरा बंदोबस्त किया गया है पुलिस के द्वारा, और सेना पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंत्येष्टि के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और चूंकि उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो चुकी है। 21 तोपों की सलामी भी उन्हें दी जाएगी और राजकीय सम्मान मिलता है उन शख्सियतों को जो देश के प्रति उनका योगदान अतुलनीय होता है। ऐसी शख्सियतों को मिलता है राजकीय सम्मान। लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिनके आगे पुरस्कार भी मानो छोटे पड़ गए, और इसीलिए एक वक्त आया जब लता दी ने ये भी कह दिया कि अब आप मुझे पुरस्कार देना बंद कर दें। और यही कारण है कि उनके पुरस्कारों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उन्हें गिनना मुश्किल है, लेकिन वो एक ऐसी कलाकार हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी सम्मान मिला, जिन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण तो पहले ही मिल चुके थे, जिनके आगे पुरस्कार भी मानो गौण हो गए। और अपनी लता दीदी को ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं मुंबई। हर बार लता दीदी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें शुभकामना संदेश ज़रूर भेजते थे। लता दीदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा रिश्ता सब जानते हैं। लता दीदी भी कई बार अपने ही शब्दों में प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी को अपना भाई मानती थी लता दी। गुजरात से भी लता दीदी का नाता रहा है, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी विराट शख्सियत रही है कि गुजरात से नाता एक ऐसा पहलू रहा है जिससे लोग जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि लता दीदी तो पूरे देश की दीदी थी। लता दीदी तो हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर आयु की दीदी थी। लता दीदी तो विश्व भर में ही लता दीदी के नाम से जानी जाती थी। लता दीदी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक ऐसा नाम लता मंगेशकर जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है। एक ऐसा नाम लता मंगेशकर जो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता रहा। चाहे बात कला की करें या उनके व्यक्तित्व की करें, उनके गाए गीतों की करें या फिर उनकी बातों की करें, हर तरह से एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती रही हैं लता मंगेशकर जी। प्रभु कुंज से तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, जो अब से जल्द कुछ ही देर में पहुंच जाएगा शिवाजी पार्क। उनका गाया गीत मेरी आवाज़ ही पहचान है, जिसे आज हर कोई याद कर रहा है। अपने पिता की शागिर्द बनकर उन्होंने सुरों को साधने का काम शुरू किया। अपनी कला साधना की शुरुआत उन्होंने अपने पिताजी के साथ ही शुरू की, और वहाँ से जो सुरों का सफ़र शुरू हुआ वो लगातार नित नई ऊंचाइयाँ छूता चला गया। हर उम्र के संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन के साथ अगर काम किया तो फिर वहीं आज के दौर के ए आर रहमान के साथ भी उन्होंने काम किया। आर डी बर्मन के साथ काम किया तो उनके पिता के लिए भी उनके मन में बेहद सम्मान था। किस तरह के गीत मैं गाऊंगी, किस तरह के भाव उसमें दिखाऊंगी, इसको लेकर लता जी हमेशा ध्यान रखती रहीं, और यही कारण है कि उनके गीतों में एक अलग झलक नजर आती है। कहते हैं जितना ईमान अच्छा उतना स्वर सच्चा, और ये नज़र आया लता मंगेशकर जी में। उनके सुर इतने सच्चे थे जो उनके सच्चे ईमान को भी दर्शाते हैं। बॉर्डर वाली
सफ़ेद साड़ी, यही थी उनकी पहचान, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व। कभी अपने जीवन में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। एक ऐसी कलाकार जो हर वक्त कलाकारों को प्रोत्साहित करती रही, चाहे वो एक युवा संगीत निर्देशक हो। हर एक के सामने जब उन्होंने गाना शुरू किया तो यही एहसास दिलाया कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही संगीत निर्देशक सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि उनकी गायकी में भी ये सच्चाई हमेशा दिखती रही। उन्होंने अपना पहला गीत 1942 में रिकॉर्ड किया तो आखिरी गीत 2019 में जाकर रिकॉर्ड किया। 40,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं लता मंगेशकर जी। एक ऐसी गायिका जिनके पार्श्व गायन के आगे कोई सानी ही नहीं है। एक ऐसी गायिका जो पर्दे के पीछे से कितनी ही एक्ट्रेसेस की आवाज़ बनी। एक ऐसी गायिका जो अपने सुरों के ज़रिए कैरेक्टर में जान डाल देती थी। एक ऐसी गायिका जिनकी गायकी के कारण ही कितनी फिल्में हिट हुई, कितने फिल्मकारों को फ़ायदा हुआ। एक ऐसी गायिका जिनकी गायकी के कारण संगीत निर्देशकों को भी नए सुर, नए आयाम प्राप्त हुए। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपनी कला साधना का जादू दुनिया भर में बिखेरा। वो ऐसी पहली भारतीय गायिका हैं जिन्हें लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाने का सम्मान मिला। एक ऐसी गायिका जिन्हें फ्रांस ने भी लेजियोन d'honneur के सम्मान के साथ साल 2007 में सम्मानित किया। और ऐसी विरली ही शख्सियतें होती हैं जिनको देखकर ये कहा जाए कि इनके लिए तो विश्व में कोई पुरस्कार शायद बना ही नहीं है, क्योंकि ये उन पुरस्कारों से बहुत ऊपर हैं। अपनी कला साधना के ज़रिए लता मंगेशकर जी ने भी ऐसी ही ऊंचाई हासिल की। और ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर लेकर फूलों से सजा ये सेना का वाहन पहुंच चुका है शिवाजी पार्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां वो लता दीदी की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारी संख्या में लोग लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं। सड़क के दोनों ओर, अपने घरों की छतों तक लोग बाहर नज़र आ रहे हैं और पूरे रास्ते में प्रभु कुंज से लेकर शिवाजी पार्क तक के पूरे रास्ते में दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर लोग भारी तादाद में उमड़ रहे थे अपनी प्रिय लता दीदी को अपने स्नेहार्पण के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, अपने शब्दों के ज़रिए अपनी पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए। लता दीदी के परिवार के लोग जो लता दीदी के इस अंतिम सफ़र में उनके साथ सेना के इस वाहन में शामिल होकर आए थे। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क से, जहां लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज के सम्मान के साथ लता दीदी को आज देश कर रहा है अलविदा। लता दीदी के जाने के संदेश से सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई। लता मंगेशकर जी का ही जाना यही आज कितने बिखर चुके हैं, आप देख के समझ सकते हैं। आशा दीदी को लोग pouring in, not only from industry but from across the globe. Several heads of states expressing their condolences. Breach Canny Hospital management announced it in the morning with profound grief. We announced that sad demise of Lata Mangeshkar at 8:12 a.m. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post-COVID-19. The statement from
Breach Candy Hospital read in the morning. Not only her family, but all of us. Most revered singer, India's most revered, most loved singer, and that's her final journey, culminating at Mumbai's Shivaji Park. There you see, draped in tricolour, the mortal remains. Lata Mangeshkar's funeral, viewers, will be performed with full state honours here at Mumbai Shivaji Park on your screens. The mortal remains have arrived and now they are kept there for public homage, for people to pay their last respects. Prime Minister Modi has arrived at Mumbai today, a while back. He will be also attending the last rites ritual. India's most loved voice, most liked voice, Nightingale of India, Lata Mangeshkar, affectionately and popularly known as Lata Didi, is no more. With full respect that she rightfully deserves, Bharat Ratna Lata Mangeshkar's mortal remains on your screen. Arriving at Mumbai Shivaji Park with full state honours, being slowly taken to the spot where the mortal remains will be consigned to flames. The last rites will be taking place. The pyre. Before that, the mortal remains will be kept for public homage. We will be broadcasting Lata Mangeshkar ji's last rites special show dedicated to the life and times of Lata ji. There you have right on your screen. As nation pays tearful tribute, bids adieu to Lata Mangeshkar at the age of 92. Nightingale going silent, but leaving behind her an unparalleled body of work, marking an end of an era. A true nationalist to the core, as many have described her. Someone lauded with numerous awards, honors, national, international, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, Dada Saheb Phalke Award. And not only that, French government awarding her the Officer of the Legion of Honor, a rare honor, only the second Indian to be conferred with Officer of Legion of Honor by the French government. In fact, some other state governments have also announced state mourning. Karnataka government has announced 2 days of state mourning as a mark of respect to legendary Lata Mangeshkar. For 2 days, national flag will be flown at half-mast
There you have Lata Didi, her mortal remains, draped in tricolour garland for public homage. Tearful moments for the family members, the relatives there. And Mumbaikars from different walks of life there. Prime Minister Modi has already arrived at Mumbai to pay his last respect to Lata Mangeshkar as nation bids adieu to its favorite singer cut above the rest. नमन दीदी, आप सदैव अमर रहे। रश्मि जी। With us.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आप देख रहे हैं सेना के जवान भारत रत्न लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई देने के लिए परिवार के लोग, मंगेशकर परिवार के लोग भारी मन से, सभी की आंखें नम हैं। As the priests prepare who's being this is the one lesson she taught, that
As you can see, the loss. Walking past, paying the भी जा रहे हैं। जैसी विभूति न भूतो न भविष्य।
पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने इन प्रधानमंत्री जी की पंक्तियों को अपना स्वर दिया, जिसे संगीत दिया था मयूरेश पै जी ने। प्रधानमंत्री जी के लिए ये पल बहुत ही कष्टदायक है। वे आज सुबह से ही बहुत बोझिल हैं, दुखी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे प्रधानमंत्री जी सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से, नम आंखों से विदाई देंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has come to pay his last respects to his sister, to a bond आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये अशी तीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने it is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान Of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये अशी तीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने it is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, लता दीदी अमर रहे, यूं तबीयत अमर रहे, मचल रही होगी, लता दीदी अमर रहे। तुम चिता देख कर न घबराना, भारताचे माननीय आत्मा घर नरेंद्र जी मोदी बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी या ठिकाणी दीदींना नम आंखों से आदरांजलि अपनी दीदी को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू नयनातून आपण सगळेच जण व्यक्त करतोय। तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर आघात गाजवणाऱ्या, गारूड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतोय।
माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगतसिंग कोश्यारी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करतात. माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भारत रत्न लता मंगेशकर यांना भगत सिंह कोश्यारी जी आदरांजली या ठिकाणी व्यक्त करतात. अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी आणि पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी दीदींना भारत रत्न लता मंगेशकर जी को अपनी त्याचबरोबर पुष्पचक्र अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. श्रद्धांजलि देते हुए पूरे महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से माननीय नरेंद्रजी मोदी, आदित्य ठाकरे जी, माननीय लता दीदींच्या सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी त्यांची सांत्वनपर भेट या ठिकाणी होते. आणि दुसरीकडे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी आता नुकतंच दीदींना पुष्पचक्र अर्पण केलं आणि सौ रश्मी बहिणी आणि त्याचबरोबर पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या दीदींना पुष्पमाला अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूषजी गोयल या ठिकाणी दीदींना आदरांजली व्यक्त करतायत. त्याचबरोबर माननीय खासदार माननीय शरदचंद्रजी पवार हे देखील या ठिकाणी दीदींना आदरांजली वाहतात. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा प्रांगण जब गूंज तक रहा है। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहेगा। जय घोष। राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या ठिकाणी लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहत आहेत. तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी देखील दीदींना त्या ठिकाणी आदरांजली वाहिली. आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी
मिल रहे हैं आशा जी से, जुन्नई से, उषा जी से, परिवार के सभी सदस्यों से। मुंबईकरांच्या वतीने मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरीताई पेडणेकर या ठिकाणी लता दीदींना आदरांजली वाहत आहेत. पुष्पचक्र वाहून त्या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त केली जाते. मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरीताई पेडणेकर. सेना के जवान दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, सौभाग्यवती रश्मिताई ठाकरे आणि पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी लतादीजींच्या कुटुंबियांची सांत्वन पदवी या ठिकाणी घेतात. आणि त्यानंतर शासकीय इतमामात लतादीजींना अखेरचा निरोप दिला जाईल. माननीय मंत्री छगनजी भुजबळ हे देखील लतादीजींना आदरांजली अर्पण करतात. माननीय राजसाहेब ठाकरे हे देखील लता दीदींना आदरांजली व्यक्त करतात. राज ठाकरे जी, गीतकार जावेद अख्तर साहब लता दीदींना अखेरची सलामी देण्यासाठी दीदी को अपनी भावांजलि देते हुए आपली आदरांजली व्यक्त करतात. विविध सैन्य दलाच्या कृती दलाकडून देखील या ठिकाणी लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून या ठिकाणी आदरांजली दिली गेली. माननीय भाई जगताप, माननीय सुप्रियाताई सुळे, माननीय विनोदजी गावडे, माननीय जावेदजी अख्तर, माननीय सुभाषजी देसाई, हेमा मालिनी. You can see Supriya Sureji on the screen. लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. The music community mourns the loss. You can see the musicians who have come to pay the last respects. Pandit Bharat Balwali, Pandit Satyashil Deshpande, माननीय अमरजी पौडवाल who cannot आणि अन्य मान्यवर believe that their mentor, their guide, is no more. त्यांचं अंतिम दर्शन विविध क्षेत्रातले मान्यवर या ठिकाणी घेत आहेत आणि असंख्य संगीत प्रेमी या प्रांगणाच्या शेजारून जी व्यवस्था केली आहे तिथून लता दीदींचं अंतिम दर्शन घेत आहेत आणि आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये हे चित्र कैद करतात. कारण आपली ही उर्मी, जगण्याची उर्मीच मुळात लता दीदींचं गाणं होतं, जे आपल्यातनं गेल्यानंतर आपण आज संपूर्ण आयुष्य हरवून गेल्यासारखं पाहतोय. कारण आयुष्यामध्ये संगीत नसेल तर आपलं आयुष्य समृद्ध होऊ शकत नाही. जगण्यासाठी 2 वेळचं जेवण आवश्यक आहे, पण त्याच्या पलीकडे संगीत आणि कला क्षेत्राची नितांत गरज असते.
आणि तेच लता दीदींनी आपल्या आयुष्याला दिलेलं मोठं वरदान होतं. You can see Anuradha Podwal coming in to pay her last respects. The ones we love don't go away. They are with us. They become a star and they're always with us. Their love, their security, the support is always with us. So many heartbroken people are filing past just to pay the last respects. सचिन तेंडुलकर, त्यानंतर ज्येष्ठ सिने अभिनेते शाहरुख खान आणि अन्य मान्यवर या ठिकाणी दीदींच्या पार्थिवाला आदरांजली वाहतात. A Bharat Ratna paying tribute to another Bharat Ratna. Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar. Lata ji was an avid cricket fan and she used to follow all the matches of especially when India played. And Sachin was her favorite cricketer. And here he is, who has to be with her in these last moments. एक भारत रत्न का दूसरे भारत रत्न को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, बेटे का माँ को नमन. You can see Shah Rukh here. अभिनेता शाहरुख खान आप सामने देख रहे हैं, वो दीदी को नमन कर रहे हैं, अपनी भावांजलि दे रहे हैं अभिनेता शाहरुख खान जी. शंकर महादेवन जी दीदी को अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए Director Madhur Bhandarkar and Ashutosh Gavarikar. O Palan Hare, sung by Didi for Ashutoshi's film Lagan, and music by A.R. Rahman, was one of the last songs, one of the few last songs that Didi sang for us. सिद्धार्थ राय विद्या बालन जी अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी को. The music world has lost its titan.
आज शिवाजी पार्क मुंबई महाराष्ट्र का एक बार फिर से साक्ष्य है इस मेला का, जहां भारत रत्न लता मंगेशकर जी को हम सभी अपनी नम आँखों से दे रहे हैं अंतिम विदाई। Shivaji fought for the nation, and Lata Didi united all of us. It's such an coincidence that the place where she is now laid to rest is at the Shivaji Park. The brave and the brave heart. आपण आज मुंबईच्या या शिवतीर्थावर सायंकाळच्या सूर्याच्या साक्षीने शासकीय इतमामात दीदींना अंतिम विदाई देण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत. खरं तर हा क्षण खूप दुर्दैवाचा आहे, पण अशा क्षणातून आपण दुःखी तर होतोच, पण जी पोकळी निर्माण होते ती पोकळी भरून काढण्यासाठी म्हणून कुणाकडे पाहावं तर समोर कोणीच दिसत नाही. पण दिसतो तो असमंतात असणारा एकच स्वरलतेचा सूर, आणि त्या सप्त सुरातून ही चिरंतन प्रेरणा अशीच कायम राहावी याकरता दीदी आपल्याला ही मानवंदना. आज शासकीय इतमामात या ठिकाणी अभिनेता आमिर खान स्वरचंद्रिका स्वरलता भारतरत्न दीदी को गान सम्राज्ञी लता दीदींना अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए या अंतिम विधीला शिवतीर्थावर इथे सुरुवात होते. अनेक मान्यवरांनी, भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अभिनेता रणबीर कपूर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्य सर्व मंत्रीगण, पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे, राज्याचे माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, कला क्षेत्रातील, क्रीडा क्षेत्रातील अनेक दिग्गज, अन्य अनेक मान्यवरांनी, माननीय शरदचंद्रजी पवार, माननीय राजसाहेब ठाकरे, अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी दीदींना इथे आदरांजली वाहिली. आणि हा अंतिम क्षण आपण आज शिवतीर्थावर या ठिकाणी जगतोय, अनुभवतोय, तो साक्षी नयनाने अनुभवतोय. काय यातून आपण एकच उमेद घेऊन जगू की दीदींचं गाणं हे चिरंतन अमरत्व प्राप्त झालेलं आहे. आता मंत्राग्नी या ठिकाणी सुरुवात होईल. आपण कृपया सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण स्थानापन्न व्हावं, आपल्या आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं. सेना के जवान दीदी को कृपया सगळ्यांनी बसून घ्यावं अशी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती. सम्मान दे रहे हैं और उनके जैसा कि आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर को भी. सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण इथे बसून घ्यावं. आपल्या त्या ठिकाणी जी आसन व्यवस्था आहे तिथे आपण बसून घ्यावं. पण शासकीय इतमामात आणि मंत्राग्नीने पूरे सम्मान के साथ इथे दीदींना अंतिम विदाई देणार आहोत. लेकर उस स्थल पर आएंगे जहां आगे की क्रिया संपन्न की जाएगी. शासकीय इतमामात दीदींचं पार्थिव आता त्या ठिकाणच्या चबुतऱ्यावर जिथे आपण त्यांना अंतिम विदाई देणार आहोत त्या ठिकाणी आप देख रहे हैं अमर रहे लता दीदी. बहुत ही अखेरचा हा तिला बंद होतो. वेदना से भरा है ये पल. असं वाटलं नव्हतं
की अंतिम विदाई आपण या ठिकाणी दिली देतो. हे अंतिम संस्कार शासकीय इतमामात शिवतीर्थावर मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं पंचतत्व में सप्टेंबर 2000 विलीन होने की बेला. सप्टेंबर 29 पासून झालेला हा प्रवास आणि आज 6 फेब्रुवारी 2022 हे महाकाल परिवारास अनंतात दिली गेली. People are screaming, जब तक सूरज चांद रहेगा, लता तेरा नाम रहेगा. They now realize that this is the last moment that this mortal body is with us, soon to be merged with the 5 elements. The army jawans have laid the mortal body, and now the Pandits will take over. शासकीय इतमामात तिन्ही सैन्य दलांच्या वतीने या ठिकाणी हा अंतिम विदाई सोहळा, अंतिम सोहळा, अंत्यसंस्कार मंत्रोच्चाराच्या साक्षीने केला जातो. शिवतीर्थावर लता दिदींना हा अंतिम निरोप दिला जातो आणि जगभरातून सर्व संगीत प्रेमी साश्रू नयनाने ही अंतिम विदाई पाहतात. पण त्या दिदी आजपासून आपल्यात नसतील, पण त्यांचा स्वर मात्र ज्यांना आपलं आयुष्य समृद्ध केलं, आपल्याला वरदान दिलं, तो मात्र कायमच आपल्याबरोबर असेल. बाकी सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण आपल्या जागेवर कृपया स्थानापन्न व्हावं. इतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, पण मंत्रांनी त्या ठिकाणी दिला जातो आणि शासकीय इतमामात हा अंतिम संस्कार केला जातो. बाकी मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न त्या ठिकाणी व्हावं. सेना के जवान भारत रत्न लता दीदी को राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं. आप देख रहे हैं
गोधीली बेला और ये शस्त्रों की सलामी। पार्क में एकत्रित हुए हैं। कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं। दीदी चिर निद्रा में विलीन हो गई है। The Indian tricolor, which was adorning our dear Lata Didi, has now been handed over to Adinath, to the family. The pride of the nation, and her family
is also pride for us. आदिनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, परिवार के अन्य सदस्य, सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं. वैदिक रीति से दीदी को विदाई दी जा रही है.
Genres of music: classical, light, bhajan, geet, thumri, ghazal, bhavgeet, lokgeet, in all the languages, and in whichever language she sang, one could not make out that that was not her native language. It was so hard to believe that a person could sing in so many languages, so many genres, in such a pitch perfect voice, with perfect command on the lyre. Her voice, which ranged over 5 octaves, had the flexibility, it had that firat that everyone strives for. It's always said that an artist can appreciate another artist. And all the singers, all the musicians are now mourning. As you can see on the screen, people crying uncontrollable tears because this loss can never be fulfilled. Her song, each and every song of hers, was like a PhD for music students who could learn so much about singing from just one song. Every expression, every thought, every feeling she could convey with just her voice. No wonder all the producers wanted her to sing for them. That voice, once it touched any song, it made that song immortal. आप देख रहे होंगे कि कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका अपने पे काबू नहीं है, क्योंकि ये बेला ही ऐसी है। पंचभूत से पंचतत्व में विलीन होने की बेला। देखिए, लोगों को उनके परिजन संभाल रहे हैं, वे इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि दीदी नहीं रही। She was the umbrella under which everybody took shelter. For that umbrella to go away is such a loss to all of us. Now, in the wake of her absence, the music industry will miss that guidance, that lighthouse, that encyclopedia, that genius that Didi was. Each and every song she touched, each and every song she gave vocals to, became immortal. वैदिक रीति से किया जा रहा है दीदी का अंतिम प्रभु से मिलन की बेला का जो क्षण होता है। पंचभूत से बना शरीर मिल जाएगा उस पंच तत्व में।
हिंदू वैदिक रीति के अनुरूप सारी तैयारियां की जा रही हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ राष्ट्र विदा करेगा अपनी बुलबुल को, जो सो गई है सदा के लिए। आप देखें, मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं। रूपनारायण त्रिपाठी जी जो बहुत बड़े कवि रहे, उन्होंने लिखा है, पीर टाले नटल रही होगी, टाले नटल रही होगी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तौ उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि वचनात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यसि मय्येव दौर्धन्यसंशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनयङ्करः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनवेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गलव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः न रुष्टति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासु दुर्भौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यां प्रतिविधं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परो मा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः। आपने देखा कि मंत्रोच्चार के द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला वैदिक रीतियों से हमारे विद्वान पंडितों ने इस रीति को संपन्न किया। अभी भी वे मंत्रोच्चार कर रहे हैं आगे की रीति के लिए। The whole atmosphere is resounding with the sound of the chariots. Words of the Lord, where it says that it is just as body as passes on. Just change the and goes back to the five elements. And the five elements are always with us. So now, when the wind blows, when the wind touches a dog, he goes
अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकः When you see the star, एतान् दृष्टमवष्टभ्यो you know she's there. नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः करवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय When you walk on the जगतो earth, हिताः you know she's there. दुष्पूरं दम्भमानवदान्विताः From a limiting body, she's become limitless. चिन्तामपरमेयाञ्च परमयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्धमन्यायेनासदञ्चयान् इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविद्वे भविष्यति पुनर्धनाम् असौ मया हतः शत्रुरनिश्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च